Ladies and gentlemen, very pleased to be joined by the star of Indian MMA, Ritu Phogat. Ritu, it's been a whirlwind of emotions, a massive build up to this fight, and then a huge surprise. I don't think anyone saw that coming. Did you see that coming? And what's your initial reaction to the fight? ऋतु वो पूछ रहे हैं कि बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व है क्योंकि इतना बिल्डअप हुआ और बट किसने देखा नहीं, किसी ने सोचा नहीं ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उसका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने अपना बेस्ट दिया और ये अंत नहीं है। मैं जल्दी मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के जल्दी आऊंगी। ठीक है। She says yes, she has given it her best. Of course, it was unexpected. But this is definitely not the end, just another beginning. Were you surprised by how good her takedown defense was? And was that disheartening when she was able to stop the takedowns? क्या ऋतु आप थोड़े आश्चर्य हो गए कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग जब आपने उसको टेक डाउन किया तो भी वो आपको वो टैकल कर पाए वो आपसे तभी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हाँ उसका डिफेंस अच्छा था, लेकिन आज उसका दिन था तो वो जीत गई, लेकिन मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। Okay, done. Yes, she definitely thinks that her defense was strong, but today was her day. But Ritu will soon reclaim her glory. Before the fight, you said that Stamp's grappling was subpar. Did she surprise you a little bit in the way that she showed off her grappling today? वो बोल रहे हैं जैसे उसने आज अपना ग्रैपलिंग दिखाया है कि आप थोड़ी आश्चर्य हो गई देखकर, क्योंकि अच्छा कर रही थी उसका ग्रैपलिंग भी और आपको लग रहा था उसका ग्रैपलिंग शायद से इतना कड़क नहीं है। नहीं, मैं सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं थे। बिल्कुल जो अब तक जितने भी अपोनेंट थी सेम वही था, ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आज उसी का दिन था और या आई कम बैक मोर स्ट्रांग। Yes. So she says that she's definitely not surprised. She was like any other opponent, but just like she said earlier, today was her day, but Ritu is gonna come back real soon and stronger than ever before. If you could go back and do anything differently with the game plan, would you make any adjustments there? अगर आपको वापस जाकर आपका गेम प्लान थोड़ा ऋतु अगर बदलना पड़े अभी जो मैच में हुआ, तो क्या आप कुछ बदलना चाहोगी अगर आपको चांस मौका मिलेगा तो, जैसे आपने खेला? बिल्कुल मैं बहुत जल्दी मतलब अभी तक नहीं देखा होगा, बिल्कुल मैं बहुत जल्दी अपनी स्टाइल और सब कुछ एनालाइज करोगी। She says she's not yet got the opportunity to review the match, but she will definitely go back and she will learn it all in details, and only then will she be in a position to to tell you how she could have altered her ways. How did you feel when Stamp tried to lock in the triangle choke? Were you thinking it was tight or that you were going to get out of it? ऋतु वो पूछ रहे हैं कि जब स्टैम्प ने एक लॉक इन और ट्रायंगल चोक आपको किया था, क्या आपको लगा ये बहुत आपके लिए कठिन था और आप उससे बाहर निकल पाओगी? नहीं, कठिन तो नहीं लगा, लेकिन मुझे नहीं पता, आज मेरा दिन नहीं था, लेकिन आज मेरा दिन नहीं था, बस मैं इतना ही कहूंगी। Okay. She didn't think it was that difficult, but like she's saying that she just feels like probably it wasn't one of the best days of her life, and she'd want to maintain that. Did the armbar catch you off guard at all, or did you see it coming? जब उसने आर्मबार दिखाया, क्या आप वापस आश्चर्य हो गए कि आपको पता था कि वो ऐसा कुछ अपनाएगी आपके खिलाफ? नहीं, जब हम करते हैं तो पता नहीं मतलब किस पोजीशन में चला जाए, तो बिल्कुल उस टाइम पे ये नहीं था, लेकिन आज उसका दिन था तो बिल्कुल। Okay. So she says that once while you are in the circle, you can't always be 100% sure, you can't predict it 100% which direction will the match go in, even if it's the strategies used by the opponent. So definitely it was not the most expected, but like she said that she all said and done, Ritu feels it wasn't her day today. Is this something that you're determined to put right in the future? Will you be chasing a rematch with Stamp? आपको पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ है फ्यूचर में जो आप करना चाहोगे, जो आप
डिटरमिन्ड हो करने के लिए, जैसे कि आपको क्या लगता है एक रीमैच आप करना चाहोगे कभी स्टैम्प के साथ? बिल्कुल, मैं बिल्कुल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगी और जो भी इसमें बेस्ट है। और मेरे बेल्ट के मैं यहाँ पे मतलब मिक्स मार्शल आर्ट में बेल्ट जीतने के लिए आई हूँ, और जितने भी इसमें जितने भी चैलेंजेस आएंगे मैं उन सभी को फेस करने के लिए रेडी हूँ। तो आई एम कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर। So she says she is determined. Of course, she will come back. She is determined to come back stronger than ever before. She is here to win the belt, and she will battle out all the challenges that life throws at her in the circle. So she is game, and she's all set to reclaim her position. She's all ready to she's all ready to prove herself yet again. As a competitor, do you want to fight Stamp again, or does the opponent not matter? Competitor आप थे, क्या आप चाहोगी कि स्टैम्प से आपको वापस एक बार लड़ना चाहिए? क्या आप चाहती हो कि आपको लड़ना है स्टैम्प से एक बार, कि आपको लगता है कि कंपेटिटर मैटर ही नहीं करते आपके लिए? बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहूंगी, बिल्कुल मैं स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगी और बिल्कुल चाहूंगी कि उन्होंने आज उसका दिन था, और लेकिन हर बार उसका दिन नहीं होगा और मैं बहुत जल्दी वापसी करूंगी मोर स्ट्रॉन्ग। So she says that definitely she'd love to do a rematch with Stamp. Of course, she would want to. And like she said, today was her day, but Ritu also thinks not every day is going to be her day. So Ritu is waiting for that day to show Stamp what a Ritu Phogat day looks like. In many ways, this Grand Prix has had a lot of ups and downs for a lot of the fighters. But last time you lost, the only time you've lost in your career, you came back and put together 3 of the best performances of your career. So does that give you confidence? Does that give you a lift, knowing that the way that you responded last time you lost? रितु वो पूछ रहे हैं कि ये ग्रैंड प्री के दौरान आपको भी बहुत कठिनाइयां फेस करनी पड़ी है, बट आप एक मैच हारे थे, बट उसके बाद आप आए और आप 3 जीत कर चली गई हो। तो क्या आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि वो है ऋतु का स्पिरिट, वो है ऋतु फोगाट का जैसे तरीका काम करने का? क्या आपको लगता है आप वापस आकर वैसे ही हासिल करोगी जीत को? बिल्कुल, मेरे फैसलों के बाद आपने देखा होगा कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आई थी। तो बिल्कुल हर कोई अपनी हार जीत से सीखता है, स्पेशली हार से बहुत कुछ सीखता है। तो बिल्कुल जो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, और मैं इन फ्यूचर जो मैंने आज जो गलती की है जो भी है वो बिल्कुल इन फ्यूचर नहीं होगा, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगी। So she says that definitely that motivates her, that encourages her, and she thinks that you win some and then you learn some. You definitely beat your wins or your losses. It will always leave you with a lesson, and she will work on all of her strengths and weaknesses. She will not repeat, or she will not repeat what she's done today, and she's going to come back stronger than ever before. She's going to put her heart, her blood, and her sweat, and she will make sure that the next time she comes in, she's going to set the record straight for everyone. How have you found the Grand Prix experience overall? बिल्कुल काफी अच्छा रहा, मतलब कि इतने कम समय में इतना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिला, इतना कुछ सीखने को मिला, और ग्रैंड प्रिक्स के फाइनल तक पहुंची, तो बिल्कुल काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। She says it's been a beautiful journey so far. She's got to learn a lot, and she's had some of the most memorable experiences here, and she's really happy that Grand Prix happened to her. You seem to have really gone up a level in this Grand Prix, getting to the final, beating fighters like Meng Bo and Li He-chin, stopping her winning streak. What kind of challenge are you looking for next? There's some really great competitors who dropped out of the Grand Prix. Who do you think is the appropriate challenge for you after this? वो बोल रहे हैं कि आपने बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना चैलेंजेस देखे हैं ग्रैंड प्री में। आपने कई सारे बहुत कड़क फाइटर्स को फेस किए हैं ग्रैंड प्री के दौरान। आपने कितने लोग को हराया है, करेक्ट? तो आपको क्या लगता है आपके नेक्स्ट आपके जर्नी में कौन सा चैलेंज होने वाला है? क्या आपको अभी कितने अच्छे सारे चैलेंजेस निकल भी गए हैं ऋतु ग्रैंड प्री से? सो आपको क्या लगता है आप नेक्स्ट किसके साथ लड़ना चाहोगी? बिल्कुल, मैं यही चाहूंगी कि जो बेस्ट होगा मैं उसी से लड़ना चाहूंगी, क्योंकि जब आप एक बेस्ट के साथ फाइट लड़ते हो तो आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, आपको आप
किस लेवल पे हो उस चीज का पता चलता है। तो बिल्कुल मैं बेस्ट से ही फाइट करना चाहूंगी। All she says is that she wants to fight with the best fighter on the card, because it's only when you face the best that's when you're able to realize your strengths and your weaknesses. So the name doesn't matter, but the best on the card is someone that she'd want to face in future. The result may not have gone your way, but in terms of building MMA in India, it seems like mission accomplished. You have a legion of Indian fans behind you. How important have they been to you this week and throughout your career? वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट आपके फेवर में भले ही ना रहा, बट आपने इतना बड़ा एमएमए के लिए नाम कमाया है भारत में कि इतने सारे इतने सारे अरबों लोग हैं आपके फैंस बनकर ऋतु। तो आप जो इंडिया में जैसे लोग आपके सपोर्टर्स है, उनका क्या रोल रहा है आपके करियर में, एटलीस्ट ये एक हफ्ते में और इसके आगे भी, क्या मायने रखते हैं आपको? बिल्कुल मुझे मेरे मतलब जितने भी फैंस हैं और जिनका सपोर्ट के बिना मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती, तो उनका साथ बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बिल्कुल मैं उन सभी का मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है इंडिया से और ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो बिल्कुल वो चीज़ मोटिवेट करती है, और वही चीज़ है कि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर वापसी आऊंगी उन सभी के लिए। Yes, so she says that definitely they play a huge role in her life, and they are her strongest pillars of strength and support. And it's not just it's not just Indians, but also the support that she receives from across the borders. So she's very grateful to them, because that's what keeps her going, that's what keeps her motivated, and that's what sort of propels her to work on herself better. And it's their hope in her that sort of is driving her for a next big challenge, and she's totally game, and she wants to come back stronger than ever before, not for anyone but for her supporters. We've seen what can happen in this sport, and things change very quickly. We're hearing that Angela Lee is ready in February next year. Will you be keeping ready if in case anything happens to Stamp? Will you be ready to step in that fight? वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कितना जल्दी जैसे आबो हवा बदलते हैं, आपको बदलते बदलते देर नहीं लगती। जैसे कि अभी एंजेला ली है, वो तो रेडी हो गई है लड़ने के लिए, फेब्रुअरी में वो लड़ना चाहेगी। बट क्या आप भी एकदम तैयार रहोगी ऋतु, भले ही आपको ऐसे चांस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर स्टैम्प फेटेक्स को कभी कुछ हो गया, कभी वो नहीं कर पाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार रहोगी हमेशा? बिल्कुल मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना एक लक्ष्य लेके आई थी, और बिल्कुल मैं उसी के लिए और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। और मैं नहीं चाहती कि स्टैम्प को कुछ हो, बिल्कुल वो डिजर्व, अंजिला जी के साथ डिजर्व करती है, वो विन हुई है, तो बिल्कुल और बिल्कुल, लेकिन उसके बाद मैं चाहूंगी कि मैं जो भी चैंपियन बने वो मैं बिल्कुल उसके साथ फाइट करना चाहूंगी। ये तो कितना बढ़िया बात बोला। So she says that definitely she will be ready, but she doesn't hope that anything happens to Stamp Fairtex, because she's worked hard, and she deserves to be where she is right now. And although she feels that she's in a deserving position to fight an Angela Lee, but whoever the champion is, Ritu would definitely want to lock eyes with them someday in future. I know you've got a huge amount of respect for Angela, but knowing what you know about Stamp and how impressive her grappling looked today, do you think she's going to give Angela a bit of a surprise when they meet? ऋतु वो बोल रहे हैं कि आपको बहुत इज्जत है एंजेला ली के लिए, ये सबको पता है, ठीक है, बट जैसे आज स्टैम्प ने आज अपना ग्रैपलिंग दिखाया है, क्या आपको लगता है कि वो एंजेला ली को भी थोड़ा आश्चर्यचकित करेगी फाइट में? क्या उसको थोड़ा सरप्राइज करेगी, क्योंकि कितना इम्प्रेसिव आज उसका ग्रैपलिंग रहा है? बिल्कुल मैं बस यही कहूंगी कि ये जो फाइट होगी ये बहुत ही अच्छी फाइट होगी, और सभी बहुत एंजॉय करेंगे इस फाइट को। She is saying that all she knows that it's going to be a very interesting fight, and people are going to have a ball for time watching them face one another. Well, Ritu, it's been fantastic having you in this Grand Prix, and brilliant speaking to you throughout fight week. We appreciate it. We appreciate you, and we can't wait to see you back. Thank you.